सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अस्माकम् अद्यतनविषयः अस्ति अभ्यास दशमाभ्यास पृष्ठक्रमाङ्क 20। एकनिमिषः। पृष्ठक्रमाङ्क 20 अस्तु। सन्ध्याजी कृपया पठतु क शब्दानि। तत् वह यत् जो यतत् यह किम कौन सर्व सब पूर्व पहला विश्व सब संसार अन्य और इतर और सर्वनाम। धन्यवादः। एकनिमिषः। इतर इतर अपि और इतर अन्य उभयोः अर्थः और and अथवा other अन्य इतर both better word translation English is other than this। अभी च किम शब्द इह कौन लिखति परन्तु कहा इति this is a better। कहा is कौन, किम is क्या effectively, परन्तु किम शब्द is so versatile तो किम शब्द can be used for kaha, katham, kim, kaha, katham, kena also sometimes, but main meaning of kim is kya और कौन is kaha। जैसे कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा, कोऽपि कः अपि प्रश्नः कः, तो लाइक दैट। हाँ अस्तु। अग्रे पठतु कृपया सन्ध्याजी। विप्रः। विप्रः ब्राह्मण, इंद्रः इंद्र, दैत्य राक्षस, प्रभु स्वामी च समर्थ, पितृ पितः पितरलोक। हाँ धन्यवादः। एकनिमिषः। विप्रः इंद्रः दैत्यः सर्वे अकारान्त पुल्लिंग शब्दानि सन्ति। तत् यत् एतत् किं सर्वे सर्वनाम शब्दानि सन्ति। मतलब अगर पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है नपुंसकलिंग है whatever it will be the same। एतत् will be for all three lingas। किम, सर्व, पूर्व, विश्व। लिंग does not matter for these। विश्व का मतलब है सब अथवा संसार दोनों। सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीराः नामानि कृत्वा विवदन्यदास्ते। दिस इज फॉर विश्व संसार। और अथवा that पादोस्य विश्वाभूतानि, so that is also the whole world, Vishwa, entire world, sab। But Vishwa can also mean like iha samsare khalu dukkhare, like that Vishwa। This samsara is also known as Vishwa। हाँ तो विप्र इंद्र दैत्य अकारान्त पुल्लिंग शब्दानि सन्ति। प्रभुः पितृ, प्रभुः उकारान्त पुल्लिंग, पितृ ऋकारान्त पुल्लिंग। So what is the difference between akaranta अथवा ikaranta, ukaranta, rikaranta? How they decline? Shashti ekavachana, for example, or tritiya bahuvachana will be the same in all ikaranta. Indrena,
Ramena, Daitena, Viprena, everything will be in Tritiya Ekavachanam. For Akaranta Pullinga. But Ukaranta Pullinga, everything will be different. Rikaranta Pullinga, everything will be different. So that is the difference between this Karanta. Kim Karas. Pita अथवा पितर्लोक उभयोः पितृ अस्ति. अवंतिका जी कृपया अग्रे पठतु. ख दान यच्छ देना पितृ देना पितृ देना वित्र वित्र दीर्घ वित्र. हाँ वितृ है क्या? हाँ वित्र देना. अपि च दा देना. हाँ दा देना. हाँ. नमस्कारम हाँ. प्रणाम. हाँ स्वास्ति आशीर्वाद. स्वाहा देवताओं के लिए अग्नि में आहुति. स्वधा पितरों के लिए अन्नादि. अलम पर्याप्त समर्थ. वशट आहुति साधुवाक. हाँ घ शक्तः समर्थ. समर्थः समर्थ. धन्यवादः. ख इति धातु क्रियाशब्दानि सन्ति. दा यच् धातु, यदा धातु अथवा यच् धातु अथवा वितृ धातु अथवा यदा धातु सर्वे देने का अर्थ में, देना के अर्थ में. और फिर ग अव्यय शब्दानि नमः स्वस्ति. This is important because there is a sutra. The sutra will come in this session only. नीचे नियम षड त्रिंशति 36 is that sutra. नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वशट. नमः नमस्कार करना अथवा प्रणाम करना. स्वस्ति आशीर्वाद. स्वाहा देवताओं के लिए अग्नि में आहुति. दैट इज स्वाहा. अगर अग्नि है तो स्वाहा, अग्नि नहीं है तो स्वाहा का मतलब कुछ है नहीं मीमांसा शास्त्र. स्वधा पितरों के लिए अन्नादि. तो जैसे हम श्राद्ध काल में प्रायतः श्राद्ध काले वा तदानन्त्याय कल्पते कठोपनिषद. तो श्राद्ध काले स्वधा पितरों के लिए अन्न. अलम पर्याप्त समर्थ. वशट आहुति साधुवाद. हाँ हाँ. तो yesterday we saw alam enough, बस. तो वैसे ही अलम पर्याप्त बस हो गया, खत्म हो गया. दिस विल कम इन आवर सूत्र. और समर्थ, ही इज गुड इनफ, वैसे समर्थ. बट दिस विल कम फर्दर इन द सूत्र व्हेन वी सी. देयर विल बी अदर एग्जांपल्स होपफुली. जैसे यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया है. हाँ, हरिहि दैत्येभ्यः अलम. हरिहि दैत्येभ्यः अलम. सो अमंग द दैत्यस. Harihi is good enough for all the Daitya. For the हाँ. Rakshasa, he can take care of. दैत्येभ्यः कस्मिन् विभक्ति अस्ति. दैत्यः बहुवचन. तो इसके द्वारा अमंग, दैट इज फॉर थ्रू ऑल दीस, amongst all these harihi is enough. What is chaturthi bahuvachana? If it is chaturthi, I think this is chaturthi because in some Ramaya Ramebhyah. Yeah, so all the Daityas Hari is enough. अथवा पंचमी विभक्ति, पंचमी बहुवचन अपि. Is also Ramebhyah. From all the devatas, among all the devatas. is devata. अच्छा, यहाँ पे दैत्य दिया है तो हाँ, फॉर ऑल द राक्षसस. सॉरी, देवता अगर लिखे तो अमंग्स्ट. दैत्येभ्यः हरिः अलम. हरि इज इनफ फॉर ऑल. करेक्ट. धन्यवादः, बहु धन्यवादः. हाँ, अस्ति, अस्तु. Also worship sadhuvad. हाँ. How does that come? Good words like Vashatkarah, like we have हाँ, in विष्णु सहस्रनाम. विष्णुर वषट्कारः. वषट्कारः is like gochara of all good shabda. Vashatkarah. That is the kara of all good shabdas. He is the person who is the reason. That comes in Bhashya, right? In the Bhashya also it is said Vashatkara. But here what example they are given? Niche Indraya Vashat. For Indra. That could be Ahuti, right? Yes, that is Ahuti.
Sadhuvada, see, Sadhuvada also will have to refer to the mantras in the Ahuti. We also have to take it that way, because Sadhuvada means what? Good words. Good word, yeah. Athava Sadhu, the words of Sadhu. This also can be taken as Sadhuvada. You can't take it as Saral Vada. Like Sadhu also meant Saral. But that does not seem the right application. Yeah, not Saral, because Saral will be easy. Easy, Right? yeah, that's not the application. Exactly. So Sadhu Chintanam we say. Yes, Sadhu Chintanam means good thinking. Good thinking, yeah. So Sadhuvad will be good word. So Vashat means what that person has said. Enough. That is used in Chaturthi Vibhakti. Artha. We will see in the Niyam 36 there will be more. But see, like this, if you think, it is very good. Daityanam, Daitebhyaha Harihi Alam. So that for all the devatas, Hari alone is Alam. Enough. I say, and Vashat also. Dhanyavada. Gha Kriya Visheshna. Kriya Visheshna Shaktaha. Shaktaha Samarth. Samartha Samarth. Dono Samarth. Okay. हाँ कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? नास्ति चेत् वयम् अग्रे पठामः. हाँ व्याकरण सरणां पुल्लिंग. अद्यतन विषय अस्ति सर्व शब्द के रूप पुल्लिंग में स्मरण करो. देखो शब्द संख्या 29 कस्मिन् पृष्ठक्रमाङ्कः अस्ति? पृष्ठक्रमाङ्क 132. एकनिमिषम्. 132. हाँ सरल. सुंदर जी कृपया पठतु. प्रथमा सर्वः सर्वौ सर्वे. हाँ सर्वं सर्वौ सर्वान्. सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः. सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः. सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः. सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां. सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु. संबोधन विभक्ति अत्र नास्ति. सर्वः सर्वौ सर्वे इति पुल्लिंग सर्वः अस्ति. स्त्रीलिंग सर्व सर्वा. नेक्स्ट पेज. सर्वा नपुंसकलिंग सर्व अपि. सर्व है सर्व शब्द सर्वं. सर्वं सर्वे सर्वाणि इति वत्. परन्तु सर्व शब्द अपि च सर्व शब्द अस्ति. सर्वः सर्वौ सर्वे. सर्वौ सर्वान्. सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः. सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः. तो सर्वेभ्यः दैत्येभ्यः हरिः अलम्. ऐसे सर्वेभ्यः दैत्येभ्यः अथवा सर्वेभ्यः हाँ. So where does that come? Yeah, it's correct. Like before and after. I'm trying to think. And it comes, you can see, but that is the meaning. Sarvebhyasya namo namo. Among, for all the devatas, everything, you only. Among all, you are here. Sarvebhyasya. Okay, it will come maybe later. Astu, dhanyavadah. हाँ. Go back to. हाँ अस्तु. सूचना. आकारांत सर्वनाम शब्दों में राम शब्द के रूप से ये 5 अंतर होते हैं. क्या है? प्रथमा बहुवचन में ए. चतुर्थी एकवचन में स्मै. पंचमी एक. हाँ तो बिटवीन राम दे आर बोथ आकारांत पुल्लिंग. रामः सर्व. परंतु राम शब्द के रूप से ये 5 अंतर होते हैं. क्या 5 है? प्रथमा बहुवचन में ए. सर्वे. नॉट रामाः. इंस्टेड ऑफ रामाः अथवा बालकाः इट इज सर्वे. सर्वं सर्वौ सर्वे. सर्व सर्वौ सर्वे. नॉट सर्व सर्वौ सर्वाः.
तो प्रथमा बहुवचन में सर्वे, चतुर्थी एकवचन में स्मै सर्वस्मै, पंचमी एकवचन सर्वस्मात्, षष्ठी बहुवचन सर्वेषां, सप्तमी एकवचन सर्वस्मिन्. So these five are different from Ramah, even though both are akaranta pullinga shabdani shabde. They are both akaranta pullinga shabdas, but these are the differences. Shesha Rama, Kha, other everything else is like Rama. Kha किम सूचना अस्ति तत् यत् एतत् किम, तो पुल्लिंग में क्रमशः त य एतत् क रूप हो जाता है, इनके ही रूप चलते हैं. केवल तत् और एतत् का प्रथमा एकवचन में क्रमशः सः एषः हो जाता है. मीनिंग इज दिस, तत् यत् एतत् किम को पुल्लिंग में क्रमशः, सो तत् विल बिकम तत्. सो लाइक सः तौ ते इन पुल्लिंग, दैट इज व्हाट दे हैव रिटन आफ्टरवर्ड्स. क्रमशः केवल तत् और एतत् का प्रथमा एकवचन सः एषः हो जाता है, बट अदरवाइज they will follow what is here only. Tam, Dvitiya ekavachana will be sarvam, right? And so it will be tam. And tam is also for Napumsakalinga Dvivachana. You will see this is a bit confusing here, but when we see examples, this becomes very clear that Pullinga Dvivachana and Napumsakalinga Dvivachana will be very similar in many places. Like Tat will become very similar, the only thing will be ta. Yat will be very similar in Pullinga, it will be ya, वैसे. द्वितीय सूचना अस्ति धातु रूप, लट में यच होगा यच्छति, वित्र होगा वितरति, ता होगा ददाति. अस्तु. हाँ, संध्या जी कृपया नियम 33 कृपया पठतु. 33. सर्वनाम शब्दों, सर्वनाम शब्दों और विशेषण शब्दों का वही लिंग विभक्ति और वचन होता है जो विशिष्ट विषय का होता है. जैसे कह नरः, कम नरम, केन नरेन, का बाला. हाँ, तो जैसे नर है नरः, तो इट विल बी कहा. जैसे नरम, it will be kam. So if you have phalam, it will be kam. Like for example, manushyam, it will be kam. Or manushyaha kaha, kaha manushyaha. Or balika, ka balika, not kaha balika. So it will just follow whatever sanya there is. Here they again kena narena ka bala, हाँ का बाला. जैसे ऐसे ही पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग वैसे है. त्रयस्त्रिंशत्. हाँ, चतुस्त्रिंशत्. अवंतिका जी कृपया पठतु. कर्मणा हाँ यमभिप्रेति स संप्रदानम. दान आदि क्रिया जिसके लिए की जाती है उसे संप्रदान कहते हैं. This sutra, कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम, this is 1.4.32. This is what I chanted today. 1.432. कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम. दान अगर कर रहे हैं 1.4.32. 1.432. This will be, agar if you are giving dan to somebody, chaturthi vibhakti has to be used. Like nripaya aham nripaya dadami, not nripam dadami. Nripaya. So I am giving to somebody ke liye. So for this chaturthi vibhakti will be used. That is what that sutra says. 1.4.32. Karmana yam abhipriti sa sampradana. If somebody is being given something, that person will get chaturthi. Nripa is getting something, so I will say nripaya. Yes. Karmana yam, whatever karma is being done, yam abhipriti. Who the one who is getting it, sir, that will be that yam abhipriti. That person will get chaturthi. Who, sir, sampradanam. That sampradanam who is going to somebody, which is going to someone, that person will get chaturthi vibhakti. So aham manushyaya jnanam dadami. वैसे. So amongst the vibhakti, the fourth vibhakti is sampradana.
also. Now, generally it will not be. But here, because we are giving dhanam to someone, that will fall under fourth vibhakti. Like for example, sometimes, generally what we should say, we should use dvitiya. I am giving to this person, that is dvitiya. That's all. Parantu, Samskrita bhashayam chaturthi vibhakti prayogah asti. In the definition, I didn't hear the word, there's nothing that says Chaturthi Vibhakti. So No, there is nothing. I think that comes from this Sampradana. Because that Chaturthi Vibhakti, this whole Prakarana 1432, this Prakarana is for Chaturthi. The main Chaturthi Sutra came a bit earlier, so they will all just follow. That's certain. 1420 something was Chaturthi, so it started. Ha, astu. Sundarji कृपया पढ़तु नियम पंचविंशति. Okay, that is Chaturthi Sampradana. हाँ, चतुर्थी संप्रदान. चतुर्थी संप्रदाने संप्रदान कारक में चतुर्थी होती है. हाँ. विप्राय धनम ददाति. हाँ, सी चतुर्थी संप्रदाने. संप्रदान कारक में चतुर्थी होती है. तो whenever we give, if there is some संप्रदान, that will follow chaturthi that they have given here. This is also sutra number. This sutra number is 2313. 2.3.13. 2313. This is like a Chaturthi Vibhakti important sutra, something like that. Chaturthi Sampradane. Aham pathami agre. Niyama Shad Trimshati. Namaha Swasti Swaha Swadhalam Vashat Yogacha. This is one of Swamiji's favorite sutras. This has come in our Brihadaranyaka things. He has asked, this is one of the 50-100 sutras. This is part of it. Namaha Swasti Swaha Swadha Alam Vashat Yogacha. Namaha, so this is 2316. 2.3.16. Namaha Swasti Swaha, this we saw already. Namaha Swasti Swaha Swadha Alam Vashat. In these 6 words, Chaturthi Vibhakti will be used. Alam mata तथा पर्याप्त अर्थ वाले अन्य शब्द जैसे गुरवे नमः अथवा ओम नमः शिवाय, not शिवम, शिवाय. So in नमः it will have chaturthi always. रामाय नमः शिवाय, शिवाय चतुर्थी एकवचन. गुरवे श्री गुरुभ्यो नमः, गुरुभ्यो चतुर्थी. हाँ, गुरुभ्यः, राइट. गुरवे गुरुणाम गुरुभ्यः, गुरुभ्याम गुरुभ्यः. तो चतुर्थी बहुवचन है, गुरुभ्यो वैसे. सो चतुर्थी ओनली विल बी यूज्ड इन नमः. अपि च स्वस्ति, आशीर्वादम. इफ यू वांट टू गिव आशीर्वाद टू समबडी, इज शिष्याय स्वस्ति और मनुष्याय स्वस्ति, नॉट मनुष्यम स्वस्ति, मनुष्याय. वैसे ही अग्नये स्वाहा, वायवे स्वाहा, सूर्याय इदं नमः स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा. एवरीथिंग स्वाहा. व्हेन यू कम, इंद्राय स्वाहा. चतुर्थी, not द्वितीया, chaturthi. Pitrabhyaha swadha. I am giving to Pitris food, annam, Pitrabhyaha. Indraya vashat. Indraya vashat, when vashat shabda is used, Indra shabda chaturthi ekavachana. वैसे ही हरिहि दैत्यभ्यः अलम. हरिहि अलम for what? दैत्यभ्यः. प्रभुः समर्थः शकः वा. तो हरिहि दैत्यव्या alam prabhu samartha shaka. Everywhere that chaturthi vibhakti only is used. Niyam 37 we will see at the end. We will see after finishing abhyasa along with examples like yesterday. Astu abhyasa vimshati. उदाहरण वाक्य अस्ति. प्रथमः, वह उस ब्राह्मण को धन देता है, स तस्मै विप्राय धनम ददाति अथवा धनम यच्छति अथवा धनम वितरति वा. तस्मै चतुर्थी एकवचन. गुरु को नमस्कार, गुरवे नमः. हाँ, अवंतिका जी कृपया वदतु पुत्राय स्वस्ति. क्या होगा ट्रांसलेशन? पुत्र का अच्छा हो. हाँ, आशीर्वाद. पुत्र आशीर्वाद. हाँ, चतुर्थ राम शत्रुओं के लिए पर्याप्त है. हाँ. रामः शत्रुभ्यः अलम समर्थः शब्द प्रभु वा. हाँ, तो एवरीथिंग इज करेक्ट. रामः शत्रुभ्यः अलम, रामः शत्रुभ्यः समर्थः, रामः शत्रुभ्यः शक्तः इति.
हाँ भवती एव कृपया वदतु पञ्चमी पञ्चम But Prabhu एतस्मै बालकाय फलं यच्छ हाँ वितरवा वितर हाँ एतस्मै ये सारे जो बालक हैं इनको फल दे दो या वितरण करो. हाँ वितरण करो. तो यच्छ वितर कस्मिन् लकार अस्ति? लंग यच्छ दे दो. आज्ञा है ना. हाँ लोट होगा. हाँ विधिलिंग. नहीं लोट होगा. सम्यक लोट अस्ति. विधिलिंग विल बी करणीयम यच्छनीयम. दैट विल बी विधिलिंग. यच्छव्या आत्मावारे द्रष्टव्यः यच्छनीयम वरस्तु मे वरणीयस्य एव इन कठोपनिषद. So that will be विधिलिंग. फलं यच्छ वेरी डायरेक्ट. लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन. हाँ बहु धन्यवादः. कोऽपि प्रश्नस्य वा सुन्दरजी? हाँ अस्तु. संध्याजी कृपया वदतु कस्मै शिष्याय ज्ञानं वितरसि से? कस्मै शिष्याय ज्ञानं वितरसि. हाँ कौन से शिष्य को हाँ ज्ञान है हाँ वितरसि. हाँ वितरम मीनिंग देना. देने का अर्थ है. यच्छ वितर दा सर्वे देने का. शिष्य को ज्ञान देना है. बहु सम्यक. कौन से विषय को ध्यान दे रहे हो? वितरसी. दे रहे हो. हाँ मध्यम एकवचन. बहु सम्यक. हाँ सप्तम कृपया वदतु. सर्वभ्यः शिशुभ्यः भोजन वितर इतरेभ्यः. सब शिष्यों को भोजन दो. इतरेभ्यः अन्य फलानि यच्छ. और बाकी को फल दो. बहु सम्यक. बहु सम्यक अस्ति. परफेक्ट. सुंदर जी कृपया वदतु अष्टम. Is it correct? Sorry to interrupt. Yes. Because for all we are giving bhojan, and like for remaining we are giving phal. हाँ correct. In that way or in that way that is correct. Sarvebhyah shishubhyah. okay. So to all the shishus you are giving bhojanam. So there may be people who are not shishu. There may be people who are just visitors. तो इतरेभ्यः अन्येभ्यः फलानि यच्छ. But you said correctly only. You didn't make any mistake. Give bhojanam to all these and then for others. हाँ सम्यक. अष्टम सुंदर जी. तिष्ठत्यत्र का कौन इधर बैठा है? And लिखत वेक. So लिखतु eka. So लिखतु is in लोट लकार. सम्यक. लोट लकार अस्ति. हाँ प्रथमा हाँ एकवचन. प्रथम पुरुष एकवचन. लिखतु एकः. एकः लिखतु. एकः लिखतु means he is right. He writes. One should write. Should write. One of you write. That is one write. One write. Right. One write. Patatu anyah. Yeah. Everyone else. Patatu anyah. Everybody else. Patatu. हाँ. आगच्छतु इह राम. Yeah. Agacchatu iha Ramah. So therefore again the same thing. Ramah come here. Correct. बहु सम्यक्. रामः कम्य. तो तिष्ठत्यत्र लिखत्वेकः पठत्वन्यः आगच्छत्विह. All these are examples of eco energy. We will see at the end of session. हाँ अवंतिका जी कृपया वदतु प्रथमः. उस बालक को दूध दो. संस्कृत भाषायां किम् अस्ति? उस बालक को क्या शब्द है? ब्याड बालक. सः शब्दे चतुर्थी एकवचन किं भवति? बालकाय. हाँ बालकाय सम्यक्. हाँ दुग्धं यच्छ. हाँ यच्छ नहीं आएगा फिर. हाँ सही है. दूधो यच्छ. बालकाय दुग्धं यच्छ. सम्यक्. परन्तु कस्मै बालकाय?
उस बालक को, दैट बालक आया, आई नॉट एबल टू गेट द वर्ड. कस्मै बालकाय. तस्मै बालकाय. सम्यक्. तस्मै बालकाय दुग्धं यच्छ. बहु सम्यक. हाँ. ख द्वितीय, जो बालक विद्यालय नहीं जाता उसको पिता दंड देता है, वो वाले. चतुर्दश 14. जो बालक विद्यालय नहीं. हाँ. यद बालकं विद्यालयं न गच्छति, उसको तद बालकाय पिता दंडम यच्छति. सम्यक्. परन्तु बालकः पुल्लिङ्गः अस्ति अथवा स्त्रीलिङ्गः अस्ति अथवा नपुंसकलिङ्गः अस्ति? पुल्लिंग. तो तत् पुल्लिंग अस्ति? नहीं, तत् नपुंसकलिंग. तो तत् का पुल्लिंग में क्या है? सह. हाँ, यू नो सह. तो हाँ, तम बालकम 14th ना, सॉरी यह बालकः विद्यालयं न गच्छति. यह बालकः विद्यालयं न गच्छति. तम उसको द्वितीया एकवचन. हाँ, तम पिता अथवा पितुः अथवा पितृ. हाँ, पिता दंडम यच्छति. बहु सम्यक्. वितरति. जनकः वितरति. यू कैन से जनक आल्सो. पितृदेवः you can say, but the pitri shabda will come, right? This pitri shabda is there in this book. In the पितृ एकवचन किमस्ति? प्रथमा विभक्ति एकवचन पितृ शब्द किमस्ति? It is on page number पित्राय. वो चतुर्थी होगा ना. पितृ शब्द पेज नंबर 124. पिता. पिता. You are correct. तम पिता दंडम यच्छति. पिता इस चतुर्थी प्रथमा एक. चतुर्थी पितृ आएगा ना. चतुर्थी क्यों चाहिए यहाँ पे? पिता उसको दंड देने वाला ना. पिता दे रहे हैं तो बालकाय तस्मै दंड दे रहे हैं. तो चतुर्थी will not be for पिता, चतुर्थी will be for बालक. पिता इति कर्ता अस्ति ना, अस्ति वा? हाँ, तो पिता will be कर्ता प्रथमा एकवचन. You said correctly only first time. यः बालकः विद्यालयं न गच्छति तस्मै बालकाय पिता दंडं यच्छति. That's what you said, right? First time. सम्यक् अस्ति. But not confident. हाँ, not confident. That is okay. With practice it will be better. But what you said is correct. हाँ. Chaturthi vibhakti is for the person getting something. Aham nripaya. दानार्थे चतुर्थी. सम्यक्. दानार्थे चतुर्थी. यहाँ पे क्या लिखा है? चतुर्थी संप्रदाने. That is a sutra. 2313. Chaturthi संप्रदाने. Person getting it will get Chaturthi. So now Balakaya is getting danda. So Balaka will get Chaturthi. One man. One is receiving and another is giving. So one who is giving for them danaya. No, one who is giving, they are karta. So they will be prathama only. Prathama vibhakti. See, and receiver. Receiver will get. Will be. Why we are saying danarthe? Danarthe chaturthi or something? Danarthe matlab sampradane. The person who is getting dana. See, you think like this, huh? If you are going to give food to मनुष्य, ठीक है, तो मनुष्य को दे रहे हैं ना आप. मनुष्य के लिए.
हाँ वैसे दैट इज द राइट वे टू से, बिकॉज संस्कृत टू हिंदी मनुष्य के लिए दे रहे हैं आप, तो मनुष्य के लिए मनुष्याय बस, तो यू आर कर्ता राइट, यू आर गिविंग द फूड, सो यू बट यू विल नॉट बी चतुर्थी विभक्ति, मैं दे रहा हूँ। कर्म will go हाँ in Chaturthi हाँ always. yes the And person karta? karta will be karta only, prathama ekavachana or prathama bahuvachana whatever, karta is the karta of that sentence, जो करता है वो प्रथमा है always. Here instead of that karma which is generally in dvitiya vibhakti, when there is dana it will become chaturthi vibhakti, क्योंकि मनुष्य के लिए अन्न देते हैं. कौन दे रहा है? सहा, सहा प्रथमा एकवचन, सा प्रथमा एकवचन, वो दे रहा है, वो सहा सा प्रथमा. ओनली दैट द पर्सन गेटिंग विल गेट मोर प्रैक्टिस, इट विल बी इजी. संध्या जी कृपया वदतु द्वितीय, इस मुनि को दन दो. थोड़ा डिफिकल्ट है. सूर्य को जल दो, दैट यू कैन से. इस मुनि को दन दो, इफ यू कैन से, बट इट इज I'll नॉट try. Yeah, I'll try both. ओके. एतस्मै मुने हाँ धनं यच्छः, सूर्याय हाँ जलं यच्छः. यच्छ, यच्छ नॉट यच्छः, यच्छ यच्छ. लोट लकार. एतस्मै मुनये, बहु सम्यक. एतस्मै मुनये सूर्य is Surya only, right? सूर्य, बट सूर्य को जल देना, सो सूर्याय जलम यच्छ. सूर्यः रामः आयतिवत्, राम रामो रामा राम राम रामन. Here we can also say Suryam Karti. नो बिकॉज देना है ना, जो भी दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, तो सूर्याय. हाँ दान कर रहे हैं तो इट विल बी चतुर्थी. हाँ सम्यक् अस्ति, बहु सम्यक् अस्ति संध्या जी. हाँ अपि च त्रयोदश, इस मुनियों को फल और फूल. तो इस मुनि को धन यू सेड, नाउ इस मुनियों को फल. एतस्मै मुनिये फलं यच्छ. मुनियों विल बी कस्मिन् वचन? ओके, मुनियो. दिस विल बी Not yachcha. So what it will be? बहुवचन. एतस्मै you said, right? एतस्मै मुनये is correct for ekavachana. You have to say in bahuvachana. एतेभ्यः, एतेभ्यः मुनेभ्यः, मुनिये मुनेभ्यः फलं, फलानि पुष्पाणि यच्छ. हाँ फल और फूल दो, तो फलं पुष्पं यच्छ अथवा फलानि पुष्पाणि च यच्छ. यू डिड वेल, दिस इज गुड. हाँ एकादश, अग्नि के लिए स्वाहा किं भवति? संध्या जी कृपया वदतु. अग्निये स्वाहा. सम्यक्, अग्निये स्वाहा, बहु सम्यक्. सुंदर जी पंचमा, उस कवि को भोजन दो. हाँ ठीक है, उस कवि को भोजन दो. हाँ So that will be us is taka. उस कवि को मतलब So, tasmai. हाँ तस्मै, So tasmai, तस्मै. tasmai, kavi. Kavi here will be sadhu. Kavi is कवि कवि, kavi. कविं पुराणम् अनुशासितारं So गीता. therefore, again in Chaturthi it will be kavi. Kavi. So kavavi, no. कवये, Kavaye. जैसे मुनये, Like munaye, मुनये हरये haraye, कवये. kavaye. हाँ तो तस्मै कवये, So tasmai कवये kavaye. तस्मै कवये भोजनम यच्छ. भोजनम यच्छ, बहु सम्यक. अंतिम इन बालकों का को पुस्तक. इन बालकों का. So therefore बालकों, एतस्मिन्, हाँ एतस्मिन्, एतस्मिन् किमर्थम्? all these, you know, in बहुवचन, right? एतस्मिन् सप्तमी एकवचन. No, sorry. एतस्मिन्, sorry. It should be एते. एतेभ्यः.
एतेभ्यः चतुर्थी एतस् इनके लिए हाँ इनके लिए सो एतेभ्यः हाँ एतेभ्यः क्योंकि एतेभ्यः बालकों के लिए राइट सो बालकेभ्यः सो एतेभ्यः बालकेभ्यः हाँ पुस्तकं दद पुस्तकानि यच्छ पुस्तकानि यच्छ अपि च एंड अपि च उन बालकों को सो उन बालकों को इज अगेन उस सो देयरफॉर इट इज अगेन इज फ्रॉम तत हाँ सो तस्मै तेभ्यः बालकों सो देयरफॉर तेभ्यः बालकेभ्यः एतेभ्यः बालकेभ्यः गेम बालकों को कन्दुक कन्दुक गेम दिस कन्दुक कन्दुकानि यच्च सम्यक् अस्ति बहु सम्यक् एतेभ्यः बालके इट्स् ओके एतेभ्यः बालकेभ्यः पुस्तकानि यच्छ अपि च तेभ्यः बालकेभ्यः कन्दुकानि यच्छ सम्यक् अशुद्ध टु शुद्ध तं बालकं दुग्धं वितर नहीं तस्मै बालकाय क्योंकि वितर शब्द चतुर्थी विभक्ति के साथ होती है एतम मुनिम नहीं एतस्मै मुनये जनकं नमः नहीं जनकाय नमः एतं प्रश्नं नहीं एतं प्रश्नं तस्मात् छात्रात् पृच्छ नहीं एतं प्रश्नं तं छात्रं पृच्छ आस्क टू दैट आस्क हिम दैट अभ्यास दो क को बहुवचन में परिवर्तित करो संध्या जी एंड सुंदर जी यू ऑलरेडी डन दो क को बहुवचन एतेभ्यः बालकेभ्यः अवंतिका जी कृपया वदतु क के कौन सी होगा चतुर्थ किस राजा को दंड देते हो बहुवचन है थोड़ा डिफिकल्ट है बट यू कैन डू कस्मै राजाय तो वहाँ पे कस्मै का बहुवचन लेना पड़ेगा हाँ क्या होगा देयर इज वन शॉर्टकट यहाँ पे जो विंशति इन बालकों को पुस्तक तो बहुवचन में क्या है एतेभ्यः हाँ एतम एतेभ्यः तो अगर कस्मै बोलना है तो एतेभ्यः सॉरी कस्मेभ्यः सम्यक् हाँ अथवा कस्मेभ्यः केभ्यः यू कैन से राजा केभ्यः इज बेटर हाँ केभ्यः फिर कहा हाँ के राजा हाँ नहीं I'm really getting इट्स ओके हाँ नो प्रॉब्लम एक वचन में क्या होगा किम अस्ति किस राजा को धन देते हो एक वचने कस्मै राजाय या अथवा कस्मै नृपाय धनं यच्छसि इति एकवचन तो बहुवचन में कस्मेभ्यः केभ्यः नहीं केशु विल बी अलग वचन है ना वी हैव टू यूज ओनली चतुर्थी विभक्ति केशु इज सप्तमी केभ्यः राजाभ्यः हाँ नृपेभ्यः केभ्यः नृपेभ्यः हाँ धनं ददाय यच्छति यच्छता यच्छन्ति यच्छसि यच्छतः ददन्ति यच्छथ हाँ अथवा दा धातु यूज करना तो ददसी ददाथ ददाथ वी हैव टू से ददथ ददसी ददतः ददथ केभ्यः नृपेभ्यः धनं यच्छथ अथवा ददथ वैसे with little practice you know this will not be difficult and moreover this is not the most important thing for us so don't get down because of this भवती एव वदतु अवंतिका जी वाक्य बनाना है नमः अपि च तस्मै अपि च नमः किं भवति एकवाक्ये
तस्मै देवाय नमः। सम्यक्, तस्मै देवाय नमः, बहु सम्यक् अस्ति। संध्या जी, स्वस्ति कस्मै? कस्मै गुरुः स्वस्ति पृच्छति। कस्मै गुरवे स्वस्ति? स्वस्ति इज फॉर आशीर्वाद, यू कैन से कस्मै गुरवे स्वस्ति, अथवा स्वस्ति कस्मै शिष्याय स्वस्ति, that is also correct. सम्यक्. पृच्छति is like taking only, no? Which यच्छति? पृच्छति. पृच्छति is to ask. To ask. पूछना. हाँ. पूछना. प्रच्छ धातु, पृच्छति. So like for example I will say aham saha pritchati, saha prashnam gurave pritchati, is asking for a question to gurum pritchati, rather is asking a question to the guru person. सुंदर जी कृपया वदतु अलम सर्वेभ्यः. हाँ, कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? एकनिमिषः सुंदर जी. हाँ. स्वास्थ्य will come only for आशीर्वाद. Yes. कुशलम के लिए नहीं यूज करते उसको. नहीं, कुशल शब्द अगर होगा तो यू कैन यूज, व्हाई नॉट, बट कुशल अगर होगा तो यू विल हैव टू यूज द्विवचन. कुशलम शिष्यम कुशलः, परंतु शिष्याय स्वस्ति. कुशलम शब्द यू कैन यूज, बट इट विल नॉट कम इन चतुर्थी विभक्ति प्रयोग. I guess so. I hope that is okay. सुंदर जी कृपया तो आलम एंड सर्वेभ्यः. अकर्षः सर्वेभ्यः व्याकरणाभ्यः अलम्. वैयाकरणेभ्यः सर्वेभ्यः न, तो सः सर्वेभ्यः वैयाकरणेभ्यः सः अलम्. That is good. So now we will see sandhi. Sandhi, eco energy. Eco energy sandhi sutra is what? Number? Eco energy is 6177. 6.1.77. इको एनर्जी सेस, यहाँ पे लिखे पुस्तक पढ़ेंगे पहले. इको एनर्जी से ई को ई होता है, उ का इव, र को इर, र और र को इल हो जाता है यदि बाद में कोई स्वर हो तो. सवर्ण वैसा ही सवर्ण स्वर हो तो नहीं. जैसे प्रति एकः, तो प्रति इकः विल बी व्हाट? प्रति एकः इज प्रत्येकः, प्रति इकः विल बी प्रतीकः. प्रति इकः इज प्रतीकः, प्रति एकः, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग. सवर्ण स्वर होगा तो नहीं होगा इको एनर्जी. इको एनर्जी होता है अगर अलग स्वर है बाद में. तो यदि बाद में कोई स्वर हो तो, परंतु सवर्ण स्वर द सेम स्वर, दैट विल नॉट हैपन. प्रतीकः देन अकः सवर्णे दीर्घः विल कम. सवर्ण अकः सवर्णे दीर्घः विल मेक दीर्घ. हाँ, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इको एनर्जी. सो प्रति प्लस एकः प्रत्येकः. ई को ई, पठतु एकः पठतु एकः, उ को इव, पित्रा पित्रा, लृ आकृतिः लाकृतिः, लृ has just become la. So we'll see example in book first and then the example like yesterday. अवंतिका जी कृपया वदतु इति उवाच. इति उवाच. अपि च अन्तिम सन्धि विच्छेद करो में अन्तिम गच्छत्वन्यः किं भवति? गच्छत अन्यः होगा तो गच्छत अन्यः, परंतु यहाँ पे गच्छत्वन्यः, तो विल कम बिकॉज ऑफ गच्छतु. सम्यक, सॉरी, सम्यक. गच्छतु अन्यः, बहु सम्यक.
You're saying correctly. Gacchatu anyaha. Gacchatu anyaha. Everybody else go. Anyaha. Others go. Gacchatu. Gacchatu anyaha. Samyak. Sandhyaji कृपया वदतु इति आह किं भवति? इत्याह. इत्याह. बहु सम्यक्. अपि च पठत्वत्र किं भवति? पठत्र. पठत्र. I'm not able to pronounce. You can get. Try. Patatwatra. पठत्र. Patatu. पठत्. Gacchatu anyaha became gacchatu anyaha. So pathatwatra will be what? पठत्र. हाँ पत्र. हाँ. तो you have to split it. कैसे split करना है? विच्छेद कैसे करना? पठ प्लस पत्र. पठतु प्लस अत्र. अत्र मतलब here. Here पठतु. कृपया वदतु. कृपया पठतु. अत्र पठतु. हाँ. कोऽपि प्रश्नस्य? Here I'm not getting how that work हाँ. Okay. This is the rule, right? Because if I say gacchatu and then anya, then how this work? You yourself say in the mind, you keep saying tu a. जल्दी बोलना है. tu a. क्या आया? व. त्वा. tu a. त्वा. व. है ना? त्वा हो गया. This is the laukika way of saying, but you can say in your mind, like let's say vadatu api. You say fully vadatu plus api किं भवति? Vadatu api. Vadatu api. हाँ. But will it be vadat api? वादत अभी होगा? नहीं होगा. वादत अपि इस वादत अपि. परंतु वादतु अपि will be उवा. So that वर्क है. I don't know if this is helpful, but this is the way to do by practice. Theoretically, answer is this: u and swara will become va. जैसे e and swara gets ya. इति अत्र इत्यत्र. तो शिशु अत्र शिश्वत्र. There is e or small e and raswa and dirgha e, it become ya. Yeah. And the raswa u and dirgha u become va. सम्यक. And ru become r. ईर. Okay. जैसे Got it. हाँ, that rarely it comes. जैसे पितृ आ will become just pitra. मेन थिंग इज दीज टू इन इको एनर्जी. ई को यह हो जाता है, ऊ को वह हो जाता है. तो शिशु अत्र शिश्वत्र. यू कैन ट्राई प्रैक्टिकली. यू कैन ट्राई इन योर ओन हेड. जैसे पठतु एकः. मैं क्या बोल रहा हूँ? पठतु एकः. वकार आ गया. तो व्हेन यू डू प्रैक्टिकली. हाँ बताइए. पठतु. हाँ पठत्वत्र. जैसे पठतु अत्र. पठत्वत्र. बस. सुंदर जी वदतु. सुधी उपास्यः. शुद्ध्युपास्यः. हाँ. अपि च यद्यपि होगा. यदि अपि. यदि it has to end in swara, right? हाँ. अब भवानेव वदतु इत्येतत्. इत्येनेतत्. भवानेव मधु अरि मध्वरि. We'll see example. It may be difficult. This in this screen in Bhagavad Gita, that thing, that list of 10 shlokas. Okay. Here eco energy has come in the first one itself, right? Eco energy is Atman Yevatmana.
Any other place with eco energy? नैव न इव कहाँ? नैव नैव sorry. नैव होगा न एव विल बी वृद्धि रेचि, राइट? परंतु 2-3 है इसमें. Okay, I'll give a hint. Manyeta is one shabda. Manyeta means that person thinks. I will give a hint. 17.27. हाँ, वदतु कृपया. वदतु अवन्तिका जी. च एव नहीं, च एव अपि वृद्धिरेचि. च एव चैव. सी 7.2. 7.2 में सदि इति वा भीयते. सॉरी, कहाँ? How to the 17.27? हाँ हाँ, करेक्ट. सदि वा भीयते, but I don't know how to speak. सत् सदि सत् इति एव. सद इति एव सदिति एव भीयते. अभिधीयते. कर्म चैव तदर्थीयं सत् इति एव अभिधीयते. That is सत्. That is good here in this case. यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सद् इति चोज्यते. कर्म चैव तदर्थीयं सद् इति एव. सदित्येव. सदित्येव अभिधीयते. There is one बहु सम्यक्. There is one more in 7th shloka, 7th chapter, 2nd shloka, 7.2. There is at least one. वक्ष्यामि अशेषतः. सम्यक्. ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः. वक्ष्यामि अशेषतः. अहं वक्ष्यामि अशेषतः. I will tell you both. ज्ञानं तेहं सविज्ञानम्. I will give ज्ञानम् and विज्ञानम् both. अहं वक्ष्यामि. Bhagavan says. And anyone anywhere else you see? Okay, we can see in Brihadaranyaka today. See, this is page number 507. We saw today Brihadaranyaka. You see any eco energy? And can you see Mo Anuswara also? We can do that as well. You got? I sent it, right? No, I got it. This thing is already. Yeah, it's okay. We'll finish. Acha, for Naishkar music, we have to finish in 2 minutes, huh? Yeah. Mo Anuswara and eco energy. Anybody can find on this page? Eco energy. See, there is a clue to eco energy. Find all the ya and va shabdas. If you find ya and va, maybe there is eco energy. Chodya parihara. No, chodya. Sorry. Chodya. Vivakshasya. No. Vivakshitum icha. That is only vivaksha. That is a word itself. You have to find va along with some other half word before that. Chodya itself is a word. किधर है? स्वार्थ विधाते विधातो. In what? In अच्छा स्वार्थ विघातो. Hey, vighata means attack. It is a word on its own. Swartha vighata. See first line. Prathama pankti mein. कर्म कांड. हाँ. नहीं, वो कर्म कांडवादी होता है. नहीं, वो तो सिंपल है. क्यों नहीं? सम्यक. क्यों? हाँ, तरह्यु. यह है उसमें. Exactly. तरही उपनिषद. तर्हि उपनिषद. एवं तर्हि उपनिषदवादी पक्षस्य
in Upanishadvadi tarhi, then tarhi Upanishad. Yes. So we can find, I think there are more. In Tika, bottom third line, Kandantara Astiti. Kandantarasya iti. E will be not equal energy. Kandantarasya iti will be Ruddhi. Before that. Vriddhi Rechi is for I. Before that, and E will be Adguna. Kandantarasya. Kandantarasya. क्या है इसमें सूत्र? कांडांतरस्य हाँ सूत्र अस्ति सूत्र दीर्घ हाँ गुण क्या गुण नहीं गुण will be हाँ येति is correct येति is गुण कांडरस्य कांडांतरस्य इति that is आद्गुणः सूत्र कांडांतरस्य आकाश कांडा अंतर कांडांतर एक वर्ड में दो संधि हाँ ये वो नीचे वाले शब्द में कितने होगा स्वार्थ विघातात् कर्म कांड विरोधात् शोपनिषदाम प्रामाण वो दूसरे पृष्ठ तक जा रहा है so in that shabda there will be even 2-3 more sandhis even कथम उपनिषद प्रामाण्यम इति आक्षेप्तुम उसमें भी टीका थर्ड लाइन फर्स्ट वर्ड ऊपर से टीका थर्ड लाइन फर्स्ट वर्ड कथम उपनिषद प्रामाण्यम इति आक्षेप्तुम देयर आल्सो इक्वलिटी इज कमिंग प्रामाण्यम इति आक्षेप्तुम हैज बिकम इत्याक्षेप्तुम देन कथम उपनिषद Katham Upanishad has become Katham Upanishad. That is not equivalent. No. Katham Upanishad plus U. Katham U. Im plus U. Im plus U. So that is Mo Anuswara. Katham Anuswara. Katham Upanishad. Katham Upanishad. So you see, एक शब्द में दो संधि है उसमें भी अलग शब्द में तो 4-5 हो सकते हैं संभवत्यतो टीका सेकंड पैराग्राफ फोर्थ लाइन फर्स्ट वर्ड हियर दिस हाँ संभवत्यतो अंतरस्या प्रामाण्यम अत देयर आल्सो एवरीथिंग इज देयर इक्वल एनर्जी इज संभवति अतो देन दिस अवग्रह हैज कम थ्रू एंगः पदान्तादति देन अंतरस्य अप्रामाण्यम दैट इज आकाशवर्णी दीर्घः प्रामाण्यम अत मो अनुस्वार एक शब्द में 4 संधि so after later practice it becomes easy. Okay. Any other questions before we start? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शान्तिः 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 शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ओम शांति 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 ओम।